सो ये बारिश नहीं तबाही आई है। चलो आप लोगों को थोड़ा बाहर दिखा के लाते हैं। ये कंटिन्यूस 3 दिन हो गए बारिश होते हुए। चलो तीन दिन हो गए हैं करीब, बारिश अभी तक रुकी नहीं है। गांव में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, नाले निकल गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो गई है, खेतों में मलबा आ गया है और ये अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सब देख के तो लगता नहीं इलेक्ट्रिसिटी भी अभी काफ़ी टाइम तक आएगी और नेटवर्क्स भी नहीं है अभी हमारे पास में। लेट्स होप फॉर द गुड। फाइनली कहते हैं ना, एक भयानक तूफान के बाद एक खूबसूरत शाम होती है। कुछ वैसा ही हुआ हमारे साथ आज की शाम। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. आज 10th of जुलाई है, मौसम काफ़ी ठीक है। कल शाम से बारिश नहीं हुई है तो काफ़ी सारी आवाज़ें आई थी, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। कूल। इसकी लग गई है लंका।
रोड तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक रोड ठीक था, बट ये एक रात की बारिश ने पूरा का पूरा तबाही मचा दिया। रोड बिल्कुल ख़त्म सी कर दी इसने। ठीक है गाइस, मिलेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। होप है कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।